किसी फॉरेन कंट्री में अपने देश का खाना खाने में एक अलग ही फील आती है और इसी फील के साथ शुरुआत हुई हमारी आज की वीकेंड आउटिंग की। भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो। हाय, पिक अप फॉर डांस। Navneet Kaur. Navneet space Kaur. Thank you so much. Yeah, you too. So we have picked our food from the new Indian restaurant here in Nanaimo, the curry culture, and we are excited to try our food. Actually, we were hoping to dine in, but because of new PC rules, the restrictions, all the dinings are closed here. So now we are going to enjoy our lunch somewhere out. So we have come to Piper's Lagoon now to have our lunch. और देखो दानिश ने सारा सामान मुझे पकड़ाया हुआ है and he's just holding the camera. So be a good cameraman, Danish. I'll try. Good food, good view, good day. यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है. इट्स एक्चुअली वेरी नाइस. अगर यहाँ पे विंड थोड़ी सी कम हो देन इट्स द बेस्ट प्लेस टू कम एंड हैव पिकनिक, एंजॉय विद योर फ्रेंड्स बाय द वाटर. और फिर अपना लंच एंड व्यू एंजॉय करके हम निकल पड़े टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन ऑफ द डे. लेट्स गो. Hi, can I get a large vanilla iced coffee? You're welcome. You have a good day. Thank you. And just after about 45 minutes from Nanaimo, हम पहुंच गए अपनी final destination पे, the Little Qualicum Falls. So finally we are going towards the Little Qualicum Falls. There are actually two falls, lower falls and upper falls. So we're gonna visit the lower falls first, and you can already hear the sounds of waterfall, which is quite nice. These are the lower falls behind me. As you can see, these are actually lower falls. I love the water sounds here. Now we will go towards the upper falls, so we'll go on that trail. This trail at Little Qualicum Falls is actually a loop of 1.3 kilometers and is very easy hike. Yeah, we have to go other way. It's closed this side. Sure. After a little bit of hiking, we have stopped at this beautiful viewpoint. Beautiful part of this viewpoint is that you can see rainbow on top of the waterfall. It's pure beauty. Seeing the sun, rainbow colors and the water. Let me show you what I'm talking about. How's it?
सो दोनों क्वालिकम फॉल्स देखने के बाद हम पहुंचे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस लूप एट क्वालिकम रिवर and decided to just spend some time there peacefully with nature. We are going to spend some time here, relax, and then we'll head back home. You say take me on a treasure hunt. I long for something new. I went in water and the water is so cold. Oh my god. My feet, they are freeze now. When I close my eyes, I see beauty lives in me. That was beautiful. So अपना मैंने दिन एंड किया विद पीसफुल मेडिटेशन एंड दैट रिमाइंड्स मी कि मैंने ये वीकेंड आउटिंग्स क्यों शुरू की हैं. वाई आई चैलेंज माई सेल्फ टू गो आउट ऑन एवरी वीकेंड. द रीज़न इज़ क्योंकि हम सब जॉब्स करते हैं एंड दैट इज़ नॉट आवर आइडियल लाइफ कि घर पे बैठे रहो. इवन स्पेशली नाउ अ डेज वर्क फ्रॉम होम, घर पे बैठे रहो, जॉब करते रहो. वी नीड टू गो आउट, स्पेंड सम टाइम इन द नेचर. और ये वीकेंड आउटिंग्स मुझे चैलेंज करती हैं कि हाँ मैं बाहर जाऊँ, कुछ नई जगह देखूँ, नए लोगों से मिलूँ और नेचर में अपना टाइम स्पेंड करूँ. दैट बेसिकली कीप्स मी ग्राउंडेड and keeps me motivated. आज के इस दिन की शुरुआत हुई थी खाने की फीलिंग के साथ और एंड हुआ नेचर की फीलिंग से. एंड आई होप आपको भी मौका मिलता रहे ऐसी छोटी छोटी फीलिंग्स को एंजॉय करने का. एंड विद दैट आज के लिए बस इतना ही. हम दोबारा मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू फीलिंग्स. टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड बी सेफ.